हमने किया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अ, तीन टाइप्स होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो मैंने कहा था अरेंजमेंट चेंज करनी है, खाली बेंड या ट्विस्ट करके ड्रॉ करने से आइसोमर नहीं बनता। तो हमने एक बनाया था 5 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल। तो चेन आइसोमर था कि उसकी चेन को आगे पीछे कर दो, उसको उसको रीअरेंज कर दो, ठीक है। तो आप ये दो तरीके थे जिस तरह रीअरेंज कर सकते हैं। ये जो सर था, हाँ जी, सर वो आपने जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो आपने बनाया था। उस पे मैं आ रहा हूँ ना। ओके। वो अगला था ना, पोजिशनल आइसोमर्स हमने किया था कि किसी ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो, उसको आगे पीछे कर दो, ठीक है। ओ एच एंड पे है, तो उसको कहीं बीच में लगा दो। और फिर लास्ट था कि अच्छा, पहले मैं अच्छा, आई फॉरगॉट टू रिप्लाई टू यू, लेकिन वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रैक्टिकल्स की जो क्लासेस है ना, वो अभी के अभी फरवरी है ना, मेरी जिनसे बात हुई मार्च के अंदर ना, वो स्टार्ट करें। तो वो ऊपर से ये भी है कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल्स ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो मेरी जिनसे बात हुई थी हम मार्च के अभी, जो मैं जिनको मैं जानता हूँ वो नहीं स्टार्ट करे थे अभी। तो मैं आपको मैसेज करके भी रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये हम कर रहे थे ना, ये हमने लास्ट टाइम किया था, क्या टोल्ड यू कि यू कैन रीअरेंज एटम्स एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द फंक्शनल ग्रुप एज वेल। कि you've got a carboxylic acid, तो what you can do is serial bond O and O बीच में आ गया, that's an ester, that's still the same molecular formula but a different arrangement. और what you can do is कि OH उठा के ना उधर एंड पे ले जाओ, तो that's an aldehyde plus an alcohol, so that so you can change the functional group as well. So we did aldehyde and ketones. I told you कि they're also functional group isomers. If you put the double bond O in the middle, that's a ketone. So the functional group has changed. Alkenes, cyclic alkanes, they're also functional group isomers of each other. So you can do many things. You can change the carbon chain, you can change the position of a certain group, or you can completely change the functional group as well. So I'm going to try and make structural isomers first. सर हाँ सर वो एल्डिहाइड और कीटोन्स पे लग उसे शो कर सकते हैं आप, वो जो ऊपर है। हाँ हाँ। सर इसके अंदर जो है सी डबल बॉन्ड ओ और एच साथ में अटैच है, उसका सिर्फ सी डबल बॉन्ड है, तो ये भी फंक्शनल को बाइसोमर्स है। हाँ मतलब डिफरेंट तो अरेंजमेंट है सर ना। लाइक, हाँ सर, लेकिन उसके साथ एच नहीं लगा हुआ कीटोन के साथ। तो ना लगाओ तो बेसिक आइसोमर तो होता ही वो, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। एच अगर लगा हाँ होता तो सर। फिर तो वो मतलब सिमिलर, वो तो फिर सिमिलर हो जाता। और प्लस एल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर सीरियल बॉन्ड इज राइट एट द एंड, तो उसके साथ हमेशा एच होता है। कीटोन के अंदर सीरियल बॉन्ड बीच में होता है, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट ही तो चेंज करनी थी, वी हैव डन दैट। तो आई बेसिकली पॉइंट इज कि आइसोमर में आप कुछ भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज you just have to rearrange things. So I'm just going to draw one, and after that we can move towards stereoisomers, ठीक है। So let me draw the isomers for propanoic acid. So there are a number of different ways in which I can arrange this molecule. So I've got C3H6O. Sorry, this is C3H6 and O2. As long as the number of atoms remain exactly the same, there could be a number of different arrangements that can be done. So starting with what I can do is कि एक काम ये कर सकते हैं कि OH पड़ा हुआ यहाँ पे, उसको उठा के ना कहीं और लगा दो। So that is one thing I can do. So I'll start making. Let's put the OH over there, right? Double bond O को उधर ही रहने दो, बाकी H, ठीक है। So that is one isomer. अच्छा, इसी तरह what I can do is कि OH को बीच में पोजीशन चेंज कर दो, तो OH को बीच में ले आओ।
So that's another isomer. ठीक है, इधर उधर चीजों की पोजीशन आगे पीछे करते रहो as long as the structure is different. अच्छा, or what I can do is कि I can have 3 carbon atoms. I can put the double bond O in the middle. ये functional group isomerism में आ जाएगा. The OH is over here, the H is here, the H is here, और बाकी. अच्छा, this is also C3H6, C3H6 and O. अच्छा, so अच्छा, then what we can do is कि ये स्पेस यूज किया करो उसको अनम्यूट करने के लिए ना, वरना शोर आ रहा था. अच्छा, सो स्पेस पर यू दबाया करो तो उससे ना वो अनम्यूट हो जाओगे. अच्छा, व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि अच्छा, यू कैन डू मेनी थिंग्स. तो OH को इधर उधर करते रहो. इस और इनफिनिट पॉसिबल अरेंजमेंट, इनफिनिट तो नहीं होंगे इसमें, लेकिन there's a lot of possible arrangements. O को इधर बीच में उठा के कार्बन के बीच में डाल दो. So what I can do is I can put the rearrange करना है. So I can put the carbon and the oxygen between the carbon atoms. वो सीडल बॉन्ड O को उधर रहने दो. ठीक है, that's another isomer. So what else I can do is I can फिर इसकी further arrangements कर लो कि O इधर बीच में आया है तो सीडल बॉन्ड O को उठा के उसकी पोजीशन चेंज कर दो. So that's another one. ठीक है, as long as you have 3 carbons and 6 hydrogens drawn in a correct structure, but it would be arranged differently. अच्छा, O को थोड़ा सा और राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन थोड़ी सी और आगे कर देते हैं. So that's another isomer. अच्छा, what I can also do is double bond जो है ना, that's between the oxygen and the carbon atoms. I can put the double bond between the carbon atoms. ठीक है, so I can do that as well. So what I can do is I can have the double bond between the carbon atoms और फिर तो OH H 1H, अब इसको भी C3H6O बनना चाहिए. So this should be, and it is. ठीक है, I think it is C3. नहीं, अच्छा, एक H ज्यादा हो गया, सॉरी, ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट था. Now it's C3H6O. अच्छा, I can make a lot of positional isomers of this कि OH को आगे पीछे करता हूँ. ठीक है, I just keep changing the position of the OH groups. So the number of possible arrangements could be many. कि the OH, I keep one OH over there and one OH on the middle one. ठीक है, बाकी सारे H है. Again, it's C3H6O. Or I can change the put the OH on both ends. I just keep changing the position of the OH, so there would be the other OH. I'm going to send it to the other side. Okay, so the point is I can just keep on rearranging things as long as the atoms are rearranged. And you can classify them as positional, or I mean, for example, these two, or these three, they would be functional group isomers. Like this one is an aldehyde and that is a alcohol. These two would be positional isomers, because the only difference between these two is, like, if I compare these two, these are positional isomers of each other, because the only thing that has happened is that the OH was at the end. Now the OH is in the middle part. This one is a functional group isomer because this one is an aldehyde. This one is a ketone. This is also a functional group isomer because it's got this one was an alcohol, but this is not an alcohol. This one is an ester. That's a functional group isomer. So a lot of them are functional group isomers. These are positional isomers. Like if you compare them, OH, I'm just changing the position. OH on one carbon atom, OH on two separate carbon atoms, OH on one side, OH on the other side. So I can just keep on going with this, and I can make many, many different arrangements. Okay, so structural isomers, I'm just going to sum it up. It's you have to rearrange things in a different way, and there are 3 possible ways in which you can do that. You can make a chain isomer, you can make a positional isomer, change positions of something, or you can just change the functional group as well. Is that clear? Rizwan, Umar, Saim, you clear? Sidra, is this clear? Yes, sir.
सर ये Yes, sir. स्ट्रक्चरल आइसोमर को खत्म कर दिया ना? क्या? हाँ बस अभी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो गए वो विल डू पास्ट पेपर्स ऑन दिस ठीक है विल मूव क्योंकि until and unless because most past papers they would involve stereoisomers as well so we should finish stereoisomers and then we'll move towards past papers ठीक है लेकिन clear है ना how to make and remember you need to learn how to classify them because they can be very specific maybe they just draw this molecule and they might ask you to draw a positional isomer. So if they ask you for a very specific type of isomer, then it has to be a positional isomer. You change the position of a certain group. With 3 carbon atoms, you can't make a chain isomer. Like 3 carbon atoms, you can't really arrange the carbon chain with 3 carbon atoms. The minimum requirement is 4 carbon atoms. So anyways, before moving towards past paper questions, we'll do this one. This is stereoisomers. Now, in stereoisomers, you had 2 different stereoisomers, and we're going to do the first one. The first one is known as geometric isomer. As a geometric isomers, you have one of the isomers is known as cis, and the other one is known as trans. There are 2 pairs of geometric isomers always. अच्छा क्या मैंने बताया था stereoisomers होते हैं क्या? Stereoisomers are like your 2 hands. The arrangement is exactly the same. You're not doing this thing. In structural isomers, you're rearranging things. In stereoisomers, you're not doing that. You're not rearranging things. Stereoisomers के जो structural formulas होते हैं, they're exactly the same. Like this is what the definition of a stereoisomer was, that it has the same molecular formula and it has exactly the same formula as well as the structural formula. The structural formula or the arrangement of the atoms was also exactly the same, but it had a different 3-dimensional shape. ठीक है, जो difference था ना, that was the हाँ जी सर इसे ये मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के? हाँ, जैसा मैंने वो 2 हाथों का एग्जांपल दिया था ना कि your 2 hands are basically stereoisomers of each other. They look exactly the same. They're bonded in exactly the same way, except that the direction of the bonds, जैसा आपने दोनों हाथ रखो तो thumbs उल्टी direction में point कर रहे होंगे. So they are different. They have different 3-dimensional non-superimposable shapes. यानी अपने उल्टे वाले हाथ को ना जितना मर्जी घुमा लो, उसको जितना मर्जी घुमा लो, कुछ ना कुछ गलत डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा होगा. It will not look like your right hand. So it's going to have different 3-dimensional non-superimposable shapes. ठीक है, so they're going to be non-superimposable shapes. So that's what stereoisomers are. The first one, geometric isomers. Now, when we talk about geometric isomers, the first thing is to identify when do you have a geometric isomer. Now, the way you identify that is number one, 2-3 चीजें होनी चाहिए. Number one, okay, there must be a carbon double bond, carbon that's got to be there. That has to be present. अच्छा, the number 2 is that's a condition. If a molecule doesn't have double bonds, there's no geometric isomers. अच्छा, the second thing is that each carbon atom in C double bond C, it must be bonded to 2 different groups. To 2 different groups. ये इसका मतलब है कि अगर आपके पास if you have C double bond C, बल्कि इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं. The third point is it should be non-cyclic. You can't have stereoisomers in a cyclic structure. So I'm going to talk about this as an example. For example, if I have this molecule, तो पहली चीज है कि identify करना है कि is it going to have cis and trans isomers or not.
So if I have this molecule and the molecule has 3 hydrogens and it's got 1H over here and it's got 3 H's with this one. So bari, first thing, does it have a double bond? So if you look carefully, it obviously does. So there is a double bond that is present. Second condition kya hai ki each carbon atom in the double bond, which is part of the double bond, like this carbon atom over here, it should be bonded to 2 different groups, which it is. There's one group over here and there's this one other group that's over here. So it's bonded to 2 different groups. The other carbon atom, is it bonded to 2 different groups? It's also bonded to 2 different groups. So agar ye conditions meet ho rahi hai na, so there would be 2 versions of this molecule. There's going to be a cis version and there's going to be a trans version. वो है क्या, वो हम discuss करते हैं, लेकिन just remember the first thing. हाँ, सर ये 2 different groups functional groups है या like कोई भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है, it has to be, और उनकी आपस में बेसिक सिमिलरिटी ना हो. इस कार्बन के साथ ना 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए जो मर्जी हो, और इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए जो मर्जी है, ठीक है, व्हाटएवर, वी डोंट केयर. एंड इट कुड बी एनी ग्रुप, Cl हो जाए, कोई इससे ज्यादा लंबी कार्बन चेन हो जाए, ठीक है. तो ये मुझे बताओ कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम मॉलिक्यूल्स, टेल मी इफ दे वुड फॉर्म सिस्ट्रॉन आइसोमर्स. सो हियर्स अनदर वन. अच्छा, इसमें ना there's a carbon atom. अच्छा, will this molecule form cis-trans isomers? क्या होगा? Will it form or will it not form? It will. ठीक है, it's going to form क्योंकि it's got a double bond, पहली चीज. फिर each carbon atom, दोनों carbon atoms को अलग अलग देखो, ठीक है, और any double bond वाले carbon atoms, they must be bonded to 2 different groups. So it is, मतलब right side वाला carbon atom, that is different, और दोनों को, both of them must be bonded to 2 different groups. फिर left side वाला, that's also bonded to 2 different groups. तो इसका मतलब है left side वाला, so both of them ticks दोनों पे आने चाहिए, ठीक है. So it will form cis-trans. अच्छा, what Sir? about, हाँ, ये जब आप कहते हैं कि 2 different groups यानी like उन्हें bond करना चाहिए उन दोनों से या like completely एक दूसरे से different हो रहे हैं वो in comparison? हाँ, मतलब बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इस तरह होना चाहिए ना, बॉन्ड ही होना चाहिए ना, कि इस कार्बन के साथ ना जो चीज अटैच्ड हो बस 2 डिफरेंट हो. मतलब इधर देख लो, ये एक और कर लेते हैं कि लेट्स से I have CH3 CH2 C double bond C, और यहाँ पे ना there's CH3 और ये 2 H लगे हुए हैं. अब बताओ, will it form cis-trans or not? बल्कि इसको भी चेंज कर लेते हैं, सॉरी, इसको चेंज कर लेते हैं, this should be, make it CH3. अच्छा, will it form cis-trans or not? Sir, I guess होगा. ठीक है, so it's going to form cis-trans. Why? Because ये कार्बन भी 2 डिफरेंट चीजों के साथ अटैच्ड है, और पूरी साइड देखनी है, ये वाला कार्बन भी 2 डिफरेंट, एक साइड पे ये और एक साइड पे ये पूरी चीज है. तो आपने मतलब you have to look at the whole thing on the right side or left side. ठीक है, is this clear? Yes, sir. अच्छा, फिर the next part is कि what is cis-trans? Like we've just identified that it will form cis-trans. The next thing is, what is cis-trans? So for cis-trans, you would have to go back to and the reasoning behind that, because sometimes they might ask you, they have actually asked you, why does it form geometric isomers? So the reason behind that is that the carbon is Sp2 hybridized. So let me just go over Sp2 hybridization. So what that means is that the carbon atom forms or is bonded to 3 atoms. Sp, Sir, 4 होगा.
नहीं 3 एटम्स ना, इधर देख लो, कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 एटम्स। इसके ओके इर्द सर। एक Cl है, एक H है और दूसरी साइड पे कार्बन है, सो इट्स ओनली सराउंडेड बाय 3 एटम्स। वो डबल बॉन्ड बना रहा है ना इसलिए, ठीक है। सो sp2 hybridization happens when carbon is bonded to 3 atoms, और उसके अंदर ना पाई बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। It makes 1 pi bond. Basically makes 1 double bond. So because it's only bonded to 3 atoms. अच्छा, anyways, carbon के पास it has 4 electrons. It's got उसका जो outer shell है, it's got 4 electrons, 2s1, 2px1, 2py1, and 2pz1. Now sp2 hybridization में what happens is कि the carbon is only bonded to 3 atoms. Because of that, 3 of its electrons, they get pulled in 3 totally different direction, like a fan. So it is fan shaped. The angles are 120 degrees. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक एटम इस साइड पे ले गया। अच्छा, so one electron, अच्छा, so one electron gets pulled by one atom and it goes in this direction. The other atom tries to pull the other electron and the electron gets pulled in this direction. The third atom tries to pull an electron and the electron goes in that direction. So these सारे electrons, they're getting pulled. अच्छा, there is no fourth atom. So what happens is that carbon's fourth electron in a p orbital remains unchanged. तो वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, फैन के ऊपर और फैन के नीचे, ठीक है। There's negative charge of that one electron. So carbon has a total of 4 electrons. 3 electrons get pulled in 3 different directions. और उन तीनों को फिर आप नया नाम दे देते हो क्योंकि their shape has changed. So instead of calling them 2s, 2px, 2py, what you do is you start giving them a different name, sp2, sp2 and sp2. तीनों को एक ही नाम दे देते हो। इलेक्ट्रॉन्स वही है, मतलब there's no difference except that the shape is different now, क्योंकि s का मतलब spherical था, but it's no longer, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन खींच के वो एटम अपनी तरफ ले गया ना, so it's no longer spherical. So the electrons, they kind of exist in different regions now, and you start giving them different names. So that is hybridization, that the s, px, py orbitals have mixed up and they've resulted in the formation of 3 new orbitals. Basically, it's the same electrons, except one electron इधर कोई ले गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, चौथा इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। That's your unchanged p orbital. Is that clear? यस Yes, sir. सर। हाँ जी, सर आपने कार्बन के एक्साइटेड स्टेट बनाया ना? हाँ हाँ, बॉन्डिंग के टाइम पे वो उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे क्योंकि एटम आके डिफरेंट जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, ये जो है ना, ये वाला this one is unchanged. अब नेक्स्ट चीज, अब वो डिस्कस करना है कि हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन नाउ। सॉरी, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, बट व्हाट इज सेस्ट्रॉन्स। तो जब भी कार्बन, whenever carbon makes double bond, carbon is sp2 hybridized. It's bonded to 3 atoms, so it kind of looks like this. तो who are those atoms जो उसको खींच रहे हैं डिफरेंट जगहों पे? So here's your carbon atom. So what I'm going to do is I'm going to make another one because there's going to be 2 carbon atoms. So there's one, this other one is come now. We'll rotate this. Okay, so I've rotated this one, and I have actually 2 of them. Okay. अच्छा, now what's going to happen is, तो ये कौन से एटम थे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे थे? Let's say there's an H that's pulling it over here, and there's a Cl that's pulling the electrons over here. और वहां पे भी ना, there's an H that's pulling the electron over there, and there's a Cl that's pulling the electron over here. जब दोनों कार्बन एटम्स आएंगे, इनकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। So which is why the 2 atoms, they will get pulled, and there's going to be a sigma bond that is going to be formed in the middle, right? So there's going to be a sigma bond that would be formed right in the middle part over here. तो ये दोनों कार्बन एटम फैन शेप्ड है, मतलब इस कार्बन को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अच्छा, so both carbon atoms are kind of fan shaped. तो इस तरह के 2 फैंस को आप आपस में जोड़ दिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर बीच में आ गए,
इसका इलेक्ट्रॉन उधर ले गया, ये इधर Cl ले गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन Cl ले गया, एक H ले गया। चौथा इलेक्ट्रॉन, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो जो फोर्थ फालतू का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर लेता है, इट एंड्स अप फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, एंड दैट्स हाउ वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये चीज हुई है। अब ये कि लेट्स से आई हैव अनदर, अब पहले तो इसी के ऊपर कमेंट कर लेते हैं। मतलब ये क्लियर है सारा कि पाई बॉन्डिंग साइम, इज दिस क्लियर? उमर, सिद्रा, इज दिस क्लियर? लीशा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, now the next thing is we learned earlier that rotation is not possible around a pi bond, or we can say that rotation gets restricted by a pi bond. अच्छा, इसका मतलब ये, I mean that's what leads to cis and trans. So what that means is कि I can't rotate this side independently. कि imagine करो कि you're just turning it, ठीक है, जैसे वो एक नट को आप टाइट करते हो, imagine this, you're turning this one side. The problem is the molecule is locked in shape. I mean, if I try to turn this one side only, what will happen is that the pi bond will break. Okay, the pi bonds are overlapping, so that means they're perfectly aligned. And if I turn one side, the whole molecule will rotate. वो वाली side भी ना उसके साथ rotate करेगी. This thing would also rotate. So the problem is that if the H, think of this as the fan. So the problem is if the H is pointing in that direction and the other carbon's H is also pointing in that direction, so that means they're always pointing in that direction. दोनों H जो है ना ऊपर की तरफ point कर रहे हैं। मतलब इस साइड को अगर आप राइट वाली साइड को ना अगर आप ट्विस्ट भी करोगे ना, द होल मॉलिक्यूल विल गेट रोटेटेड, क्योंकि वो कनेक्ट हुआ हुआ है, दिस थिंग ओवरलैपिंग, सो द होल मॉलिक्यूल विल रोटेट alongside the right side. मतलब इस साइड को रोटेट करोगे तो वो वाली साइड भी रोटेट करेगी, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट रोटेशन। इस साइड को रोटेट करोगे तो वहां से, because of the presence of pi bonds, that side would also simultaneously rotate. ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड को वरना तोड़ना पड़ जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर हाँ, लेकिन रोटेट करने से क्या पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं? नहीं, पाई बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है ना, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, तो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा ना, तो फिर बेसिकली ये साइड भी साथ ही रोटेट करेगी ना। अगर मैं इस साइड से, राइट साइड से उसे पकड़ूं और उसको नट की तरह टाइट करूंगा, उसको रोटेट करूं राइट साइड से, एच और सीएल को पकड़ के ना इनकी पोजीशंस में चेंज करने की कोशिश करूं, मतलब एच को मैं नीचे लाने की कोशिश करूं, सीएल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करूं, तो वो राइट साइड वाला उसके साथ ही रोटेट होगा ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल होगा, डबल बॉन्ड इतने आराम से तो टूटते नहीं है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब एक और मॉलिक्यूल बनेगा विच वुड बी वेरी सिमिलर टू दिस वन। अच्छा, उस मॉलिक्यूल में ना पाई बॉन्ड बनने से पहले ही ना जो अरेंजमेंट थी ना वही वही डिफरेंट थी, मतलब सेम चीज, एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है, द बट द अभी पाई बॉन्डिंग से पहले की बात हो रही है, यानी उधर तो पाई बॉन्ड बन गया ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाई बॉन्ड बनने से पहले इन दोनों की अलाइनमेंट अगर उल्टी होती कि दो कार्बन एटम्स आपस में जोड़े, एंड अलाइनमेंट में ये फर्क होता कि देयर वाज एन एच ओवर हियर, बल्कि उसको चेंज कर लेते हैं, देयर वाज अ सीएल ओवर देयर और एच नीचे की तरफ था, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में द एच वाज अप देयर एंड द सीएल वाज नीचे वाले फैन का पार्ट था। तो अगर वो पाइप बॉन्ड बनने से पहले वो इस अरेंजमेंट में होते हैं दोनों कार्बन एटम्स, फर्क कोई नहीं है, बस वो है कि अरेंजमेंट उनके जो बॉन्ड है वो एक ऊपर था और एक नीचे था, मतलब पहले ही मैंने रोटेट किया हुआ था एक साइड को, मतलब बॉन्ड बनने से पहले ही मैंने रोटेट कर दिया कि ताकि वो एच नीचे आ जाए और सीएल ऊपर चला जाए, और फिर आके दे स्टार्ट ओवरलैपिंग, they form a they form a sigma bond in the middle and they form a pi bond, साथ ही ना ओवरलैपिंग हो जाती है और पाई बॉन्ड बन जाता है।
अब मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है ना वो लॉक होगी इन प्लेस। आई मीन अब वो एक साइड इंडिपेंडेंटली रोटेट ही नहीं कर सकती। लेकिन फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है स्ट्रक्चरली, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, बट द मेन डिफरेंस इज कि यहाँ पे द एच ओवर हियर आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। वो नीचे की तरफ कर रहा है, वो ऊपर की तरफ कर रहा है 120 डिग्री के एंगल पे, और उधर दोनों एच एक ही साइड पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। अब अगर वो बन गया ऐसा तो फिर बन गया, वो अब सारी उम्र इसी तरह रहेगा। वो एच दोनों जो है ना वो एक ही साइड पे पॉइंट कर रहे होंगे। ओवर हियर द एच आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो और अब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस साइड को रोटेट करूंगा, अगर मैं इसको पकड़ूंगा नीचे वाले मॉलिक्यूल को, अगर मैं पकड़ता हूँ इस साइड को, इफ आई ट्राई टू रोटेट दैट साइड ताकि वो एज ऊपर की तरफ चला जाए, तो वो दूसरी साइड भी रोटेट कर जाएगी उसके साथ ही, तो पूरा मॉलिक्यूल ही फ्लिप कर जाएगा। लेकिन दोनों एज अभी भी ऑपोजिट एंड्स पे पॉइंट कर रहे होंगे, एक नीचे होगा तो एक ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। तो ये आइडिया, इज दिस आइडिया क्लियर? यस सर। So that's the idea, and that is what cis and trans isomers are. सेम साइड का मतलब तो आपने खैर पाई बॉन्ड के साथ शो नहीं करना होता, वैसे तो पाई बॉन्ड बनाने को वैसे ही कह सकता है, वो तो आप बना दोगे, ओवरलैप कर दो दो पी ऑर्बिटल्स। लेकिन most of the time when they ask you to draw cis and trans, it's basically whenever you have a double bond, this is what you're going to draw. Okay, if I want to draw a cis trans, to focus on the double bond. Double bond के shape क्या होगी? It's going to be fan shaped. It's going to be, so it's going to be 120 degrees angle. तो एक में the two H's in this case are pointing in the same direction, and while the Cl's are pointing downwards. And there's going to be another molecule which is going to have the same arrangement, like the atoms would be bonded to the same carbon atoms, except that the difference now is कि इसमें there is an H that is pointing upwards and there's the other H that is pointing downwards, while the Cl's are also pointing in opposite directions. तो H को ही खाली देख लो तो वो सेम साइड पे पॉइंट करें। यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर Cl। तो एक में, जबकि दोनों में स्ट्रक्चरली कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चरली दिस थ्री डायमेंशनल शेप इज डिफरेंट। So structurally the H is still bonded to the same carbon atom. This H is still bonded to the same carbon atom. Shape different है, वहां पे H ऊपर की तरफ है, यहाँ पे H नीचे की तरफ है। This one is known as cis, while the other one is known as trans. So you've got a cis molecule, you've got a trans molecule. तो ये सर हाँ सर ये ट्रांस के अंदर आप कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम को हम लोग लाइक चेंज करें उसकी पोजीशन, तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी ना उसके साथ, ऑपोजिट हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए। हाँ, ओके सर। मतलब वो पूरी चीज इकट्ठे घूमेगी ना, ये नहीं हो सकता कि ये अलग घूम रहा हो। मतलब ये नहीं हो सकता, वो अगला वाला पार्ट भी है ना उसके साथ ही घूमेगा। वो समझ आ रही है ना, विजुलाइज करो पाई बॉन्ड बने हुए ना। मतलब इसको अगर यस सर। अगर मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी मैं कर लूँ ना, कि ये हमने पहले भी किया था कि मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ईथेन कर लेते हैं पहले। असल में हमने पहले भी किया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये बल्कि दोनों ही आ गए। अच्छा, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसके रोटेशन, सॉरी चलिए आ गया। अच्छा, हमने किया था सिग्मा बॉन्ड होता है उसके रोटेशन इज पॉसिबल। मतलब ये तीन जो पंखे की फैन की तरह, थिंक ऑफ दिस एज अ फैन दैट्स रोटेटिंग अराउंड। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता, आप रोटेट करो ना, नथिंग वुड हैपन। लेकिन इसको अब ट्विस्ट नहीं कर सकते। मतलब इस साइड को ना मैं पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होती है ना, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो व्हाट विल हैपन इज यू कांट जस्ट रोटेट वन साइड। मतलब एक साइड को ट्विस्ट करोगे ना तो वो फिर या तो पाई बॉन्ड बीच में से टूटेगा, मतलब इंडिपेंडेंट रोटेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कि आप इस साइड को किसी और डायरेक्शन में ट्विस्ट कर रहे हो एंड दैट साइड इज गेटिंग ट्विस्टेड इन सम अदर डायरेक्शन। मतलब वो तो बीच में पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना वो तो अगर आप इस साइड को रोटेट करोगे वो साइड भी साथ रोटेट करेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जबकि ये सिग्मा बॉन्ड्स में ना वो फैन की तरह ना, वो अलग घूम रहा होगा, ये अलग घूम रहा होगा, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। रोटेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इंडिपेंडेंट रोटेशन होगी। ठीक है,
तो इसकी वजह से ना you get sigma sorry you get cis and trans molecules. अब draw किस तरह करना है, वापस उस पे आ जाओ. वो ड्रॉ करने को क्या आएगा कि वो क्या आएगा, इसके बनाओ cis trans, ये पहले वाले के, बल्कि all of them are making cis trans, right? So let's say we want to draw this one. So what you're going to do is you're going to draw the shape. अब shape के साथ बहुत क्वेश्चंस आएंगे shape ड्रॉ करने के. आपने क्या शुरू करना है, आपने फोकस ही डबल बॉन्ड पे पहले करना है कि भाई मैं डबल बॉन्ड से ड्राइंग शुरू करो. डबल बॉन्ड होगा तो आपको होगा कि ठीक है वो कार्बन जो है ना वो एक इधर होगा 120 डिग्रीज फैन शेप्ड. तो द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस. तो आपने ना डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है, एवरी टाइम. मतलब उससे अगले वाले को भी ड्रॉ करेंगे ना सिस और ट्रांस, तो आपने ड्रॉ ही डबल बॉन्ड करना है. इसके दो होंगे तो दोनों, इसके भी नीचे ना दो ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ना. अच्छा सो ये वाला मैं इसका कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला ना दिस इज दिस वन. अच्छा एनीवेज, फिर आप सोचोगे भी इस कार्बन के साथ, ठीक है, रिमेंबर 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ करनी है पेपर में. दिस कार्बन एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है. So attach it. There's going to be an H on one side and there's going to be a CH3 on the other side. ठीक है. इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड वाला दूसरा कार्बन, it's got an H, it's got a CH3. So तो एक साइड पे H होगा और एक साइड पे there is going to be CH3. ठीक है. तो ये एक वर्जन बन गई है. तो दूसरी वर्जन क्या होगी, दूसरी वर्जन जो होगी उसमें बस एक साइड जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो. वो H ऊपर था ना तो H को उसको ट्रांस. सो ये वाला कौन सा है, दिस इज सिस और ट्रांस? सिस. ठीक है, सेम साइड होगा तो दैट्स गोइंग टू बी सिस, मतलब सेम टाइप के ग्रुप्स. अच्छा चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों साइडों के ग्रुप सेम हो. शर्त बस ये है कि द कार्बन ओवर हियर शुड बी मेकिंग bonded to two different groups, the carbon over here should be bonded to two different groups. All four can be different, that's even allowed. So anyways, the trans version would be that you'd keep one side the same. So there's H and there is CH3. And what you do to the other side is you just turn it the other way around. Okay, the H is pointing downwards and the CH3 is pointing. So this is the second version of the molecule, which is going to be a different version. And these two would always be different. So I'm going to start with the double bond and draw this. So I'm going to do the same thing for this one. Start with the double bond. Make sure you draw fan shape, trigonal planar. This one has H and CH3 on one side. So ek taraf there's going to be H and on the other side you've got CH3. And the other one has, kya hai dusri side pe? It's got a CH3 and a CH3 CH2. So it's got a CH3 on one side. And on the other side, it's got a CH3 CH2. Achha, which version is this one? Trans. ठीक है, this one is trans क्योंकि the CH3s जो same type of groups are, they're pointing in opposite directions. So that one is trans. और वो जो दूसरा होगा इसका फिर cis जो version होगी, right side, just draw the right side the other way around. So you will have CH3. अच्छा, keep one side the same. और दूसरी साइड को flip कर दो, CH3 on top. And the H is downwards. So this time the same type of groups are in the same direction. So that's your cis version. So you've got a cis, you've got a trans. सर हाँ, सर इस तरह से हो सकता है कि सारे लाइक ग्रुप्स जो हो वो डिफरेंट हो, इस तरह से तो नहीं हो नहीं सकता ना? हो सकता है ना, वो मैंने कहा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ऑल फोर कैन बी डिफरेंट. जो उसके अंदर लेकिन नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो वैसे कोर्स में नहीं है. EZ जो है ना, दैट्स नॉट इन योर कोर्स. देख भी लेते हैं वैसे एक सेकंड, सिलेबस क्योंकि नया है. लेट मी जस्ट डबल चेक. लेकिन वो चारों डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि एक सेकंड मैं फिर से वो रिपीट कर दूं. द शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी? द कंडीशन वाज that the carbon over here must be bonded to two different groups and the carbon over here must be bonded to two different groups. That was the condition. So all four can be different as well. Clear? Yes sir. So that is also geometric isomers. That is exactly the same thing.
लेकिन उसकी नेमिंग जो है ना वो फिर वो सिस और ट्रांस नेमिंग नहीं होती, उसकी नेमिंग होती है EZ नेमिंग, विच इज काइंड ऑफ द सेम। लेकिन वो मेरे ख्याल से आई मीन पहले तो डेफिनेटली कोर्स में नहीं था। कहाँ गया? सो वी कैन जस्ट क्विकली सर्च। ये तो ट्रांजिशन मेटल का आएगा, ये तो बाद में होगा। नहीं, सिस ज्योमेट्रिक। तो यहाँ पे हाँ दिस वन, वो जो दूसरी है ना इसका बिल्कुल इसका इसी टाइप का एक और एग्जैक्टली सिमिलर है। यूज ऑफ EZ नोमेनक्लेचर इज एक्सेप्टेबल बट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो EZ जो है ना वो उन्होंने कहा कि वो ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो हम विल जस्ट स्टिक टू सिस्ट्रॉन्स। ओके ओके सर। तो लेकिन वो एग्जैक्टली सेम है। अगर वो चारों डिफरेंट हो जाए ना फिर वो आप EZ में चले जाते हो, उसमें ना वो उनकी MR वगैरह देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से नेम करते हैं। क्योंकि जब चारों डिफरेंट होंगे ना, जब चारों डिफरेंट होंगे ना फिर पता ही नहीं लगेगा ट्रांस कौन सा है सिस कौन सा है। समझ आई बात? मतलब यस सर। इसमें तो ट्रांस इसलिए पता लग रहा है CH3 उधर है, CH3 नीचे है, और सिस इस तरह CH3 इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो उसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी। चलो ये एक क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं इसका ना, कि अगर कहीं खुला हुआ पड़ा हुआ है, एक सेकेंड। नहीं ये नहीं। हाँ चलो ये कर लेते हैं कि इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन इज है, तो हटा के दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स C2H2Cl2 इंक्लूडिंग सिस ट्रांस। तो क्या है, सारे ड्रॉ करो इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल C2, सो दिस इज C2H2Cl2। सो C2 जो है there's got to be a double bond, ठीक है? तो HH और Cl and Cl, right? So that is one. उससे क्या, जब वो आइसोमर्स की बात करते हैं this includes structural isomers as well. So that is one. The other one would be क्या होगा दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर के दोनों Cls ऑपोजिट साइड पे हो जाए, राइट? अब मुझे बताओ इनमें से which one, और कोई नहीं हो सकता, या तो दोनों Cl इस कार्बन एटम पे हो और both Cls are on opposite sides। अब मुझे बताओ इनमें से which one is forming cis trans isomers। दूसरा वाला। ठीक है, सो इट्स द सेकंड वन। तो इसको ना आप दो काउंट करोगे क्योंकि इसकी दो वर्जन होगी, एक इसकी सिस होगी वर्जन और एक इस मॉलिक्यूल की ट्रांस होगी। यानी टोटल तीन हो जाएंगे, एक ये मॉलिक्यूल है और इसकी दो वर्जन है, ठीक है? रिमेंबर काउंट दिस एज टू। एक यही मॉलिक्यूल होगा सिस फॉर्म में और एक यही मॉलिक्यूल होगा इट्स गोइंग टू बी इन द ट्रांस फॉर्म। तो ये दो होंगे एंड दिस वुड बी वन। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 3। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह वी कैन डू another one के अच्छा वी कैन अच्छा इसी तरह वी कैन डू another one। मैं इसी का दोबारा करें C3H4। अच्छा C3H4Cl2। अच्छा ये कर लेते C3H4Cl2। इसके ड्रॉ करें। इज आस्किंग, वैसे नीचे ड्रॉ हुए लेकिन सारे ड्रॉ कर लेते हैं। इज आस्किंग के सारे ड्रॉ करो स्ट्रक्चरल एंड सिस्ट्रॉन्स। सो नाउ स्टार्टिंग विद C3H4, बल्कि ये होमवर्क है, ठीक है? ट्राई एंड डू दिस C3H4Cl2 इंक्लूडिंग ऑल आइसोमर्स इंक्लूडिंग सिस्ट्रॉन्स, और वो सारे डाइक्लोरोप्रोपीन होने चाहिए। मतलब शर्त ये है कि दे शुड ऑल बी, मतलब उससे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे शुड ऑल बी डाइक्लोरोप्रोपीन, यानी दे शुड बी प्रोपीन, मतलब मॉलिक्यूल प्रोपीन ही होना चाहिए with 2 chlorines on it। तो you would have to draw this, so try doing that as an assignment, ठीक है?
वो साइड तो ड्रॉ, हाँ डबल बॉन्ड एक ही होना चाहिए ना? वो देख लेना, हमें नहीं पता कि कितने डबल बॉन्ड होंगे, उससे क्या है कि बस जो भी हो वो डाइक्लोरोप्रोपीन हो, मतलब क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। और उसने क्या, एक साइड ड्रॉ करो, स्ट्रक्चरल प्लस सेस्ट्रॉन्स, लेकिन रहना उसे डाइक्लोरोप्रोपीन ही चाहिए, मतलब उसे क्लोरीन की पोजीशन नहीं बताई भी, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये इसका ये मैं भेज रहा हूँ उसके ऊपर, ट्राई डूइंग दिस वन। चलो ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ सर वो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर के नोट्स या लेक्चर्स होंगे आपके पास? नोट्स होंगे डेफिनेटली, मैं देख लेता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर के सब अगर हो सके तो सेंड कर दे प्लीज। ठीक है ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।